Hello and welcome to another episode of the SNS Cricket Diaries. I hope आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे. Guys, हम SNS Cricket Diaries में we continue to invite some wonderful guests and we try to get an insight into their way of watching cricket and viewing what is going on in cricket. So इसी process को आगे बढ़ाते हुए आज I'm extremely fortunate and lucky to have with me Saad Nasir from Pakistan. Hello, Saad, कैसे हैं आप? Hi, thanks, Siddharth. I'm good. Thanks for inviting me. Thank you so much, Saad. I mean, for my channel, it's an extremely wonderful opportunity to interact with you. It's an honor to have you. I'm sure a lot of Indians also follow you here. आपका podcast जो है, which I'm sure people who are watching this would know, Pro Sports Pakistan. That's the YouTube channel that Saad Nasir heads, and he's a sports content specialist and head of Pro Sports at Pro Pakistani. And yeah, I mean, I will get into the intro of Saad, but just before that, I'd love to tell my audience that for me, it's a personal moment of joy to talk to Saad because I have interviewed Behram Kazir also earlier, and I'm just so lucky to have Saad. And I told Behram also earlier that Saad and Behram are like the great cricketer version of Pakistan. So and I'm sure that I mean we don't need to compare you guys with anyone else. You have a niche of your own, so it's an absolute pleasure to have you. So Saad, let me just introduce you to my audience who may not know you, which would be probably very rare. So Saad is an experienced and accomplished sports writer with a track record of driving digital traffic and captivating audiences through compelling content. He is proficient in sports coverage, particularly in cricket and football. So I'd like to say that I have watched a few of Saad's episodes on football as well that he has done and has commentated on some football games. So you should check that out. I will link the YouTube link of his in the video description at the end of it. So you guys can go out and watch all the great work that Saad does on Pro Sports. He's skilled in managing social media platforms, creating visually appealing content, and curating engaging reels. Known for breaking impactful news stories and establishing valuable connections within the sports industry. So let's get that now done and dusted, Saad. And thank you so much for having here. कैसे हैं आप? I'm good. I'm good. Thank you so much for inviting us, Siddharth. It's a pleasure. Pleasure is ours as well, Saad. So, Saad, on the SNS Cricket Diaries, it's been now almost, I would not say almost a year, but I guess maybe about 7 to 8 months. And we've had a wonderful amount of Pakistani presence on our channel. For some reason or the other, I've been lucky to have some wonderful people come across the border and talk about cricket. So it's a valuable addition that you're going to bring to my podcast. So I'd like to start, Saad, by asking the question about the recently concluded PSL. So how do you view, of course, the captain who won it for Islamabad is now back in the team, Imad Wasim. So how do you view the recently concluded PSL? What are the positives to take away, and especially keeping in mind the World Cup, which will come to that? So, yeah, what are your first impressions about the PSL? I mean, first of all, I'd like to correct you, Siddharth. Imad wasn't the captain. Shadab was the captain when Islamabad Oh, won. I'm so sorry. Yes, Shadab. Yeah. Okay, Shadab. Yes. So, keeping that aside, एक तो वैसे मैं इस्लामाबाद को support करता हूँ, born and bred in Islamabad. तो वो Yeah. एक moment जो था, that was special for me, seeing my team lift the third title. But apart from that, PSL has established itself as one of the better leagues in the world. Right? IPL है, उसके बाद there's a whole lot of other leagues therein as well. But PSL is right up there on the top, just below IPL, I would say. जो आता है. The only issue that PSL has at this moment in time is that what we were expecting as fans and as big analysts is कि PSL बहुत rapidly grow करेगा. उस हिसाब से रैपिड उस तरह की ग्रोथ नहीं हुई. 9 सीजन हो गए, 10 सीजन अब नेक्स्ट आएगा, which is going to be interesting as well if you've heard reports कि IPL के साथ अब वो clash होगा. So PSL का जो थोड़ा सा issue in the past रहा है वो ये रहा है कि it's been sandwiched between the IPL and the SA20 and the ILT20. So वो वाला एक जो गैप होता है, एक तो वो है बड़ा छोटा, तो उसमें
players, international foreign good players, they prefer to play in the IL T20, take a 2-3 week gap, and then go to the IPL. So वो जो quality cricketers PSL को मिलते थे ना पहले, in the first few seasons we saw the likes of AB de Villiers, Brendan McCullum, and all of that stuff. Sean Tate, ये सारे खेलते थे, तो वो थोड़ी सी क्वालिटी तो अगर पाकिस्तानी फैंस ना माने तो वो गलत, बिकॉज वो तो हुआ है. अब ओवरऑल पीएसएल से फायदा ये है कि वी unearthed a lot of talent in the T20. So काफी youngsters, शादाब खान जिस तरह इस्लामाबाद का कैप्टन था, he came in through the youth से ही आया था. He was an emerging pick for Islamabad back in the third season. So इस तरह के players बहुत ज्यादा पाकिस्तान को मिले who've gone on to represent Pakistan at the international level and have become a core member of the side. But then again, वो quality जो first 4-5 seasons में big international foreign players के साथ खेल के बच्चे सीख रहे थे, वो थोड़ा सा डाउन तो हुआ है इसमें कुछ. This season was surprising for me in one sense कि if we compare it to the previous season, PSL 8 से PSL 9 को compare कर, PSL 8 में हमें काफी ज्यादा flat pitches देखने को मिली थी. अभी जैसे IPL में स्कोर हो रहे हैं 270 280, वो PSL में लास्ट ईयर हो रहे थे 260 250 260. पिंडी की पिच भी फेमसली चेंज हो गई थी, छोटे फ्लैट ट्रैक्स. तो वो एक जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है, हाँ फर्स्ट फ्यू मैचेस वर ग्रेट, उसके बाद यू नो इट गेट्स मोनोटोनस, हर बंदा आके छक्के मार रहा है. This season we didn't see that. This season was competitive. Apart from Lahore Qalandars, who completely, you know, gave up in the first few matches. बाद में एक दो मैचेस जीत गए थे वो. The rest of the 5 teams were right in it till the last match of group stages. So that thing was good to see कि थोड़ी सी इन्होंने उस पर वर्क किया कि पिचेस हमारी न्यूट्रल होनी चाहिए, और जिसकी वजह से competitive cricket देखने को मिली थी, which I think is good. अब मैं नेक्स्ट सीजन पे आऊंगा PSL 10. That's going to be interesting because we can take on the IPL. Take on क्या मतलब ये है कि क्लैश होगा, IPL और PSL एक साथ चलेंगे, कोइंसाइड करेंगे सीजन. अब एक तरफ से अपॉर्चुनिटी भी है पाकिस्तान के पास, और एक तरफ से बहुत बड़ा चैलेंज. चैलेंजेस आ जाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में चैलेंजेस आ जाते हैं, प्लेयर्स कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे, IPL कौन प्रेफर करेगा, मेजॉरिटी ऑब्वियसली IPL प्रेफर करेंगे, बात सुनिए. अब वो फिगर आउट करना पड़ेगा PSL को कि हम किस तरह इस लीग को आगे बढ़ा सकते हैं, टेकिंग ऑन द जायंट IPL. अब देखना पड़ेगा उसका क्या होता है सिद्धार्थ, बट ओवरऑल आई डू थिंक और कोई विंडो बंद नहीं रही थी, तो दिस वाज द करेक्ट डिसीजन. दिस वाज द ओनली डिसीजन. Right. Interesting. Yeah, I think with so many leagues that have come up, it's going to be a challenge for the administrators and even for the players. I think at some point of time, उनकी loyalty भी test की जाएगी as to which team that they would prefer to play for. But coming to IPL now, Saad, and talking about you spoke about the huge scores that have been coming up. So what is your take on it? Because it's sort of suddenly boomed, because till last year 220, 210 was sort of the max that people were reaching. Yes, over the years in IPL, we've had scores of 250, 260, but very rare to have one season in which you're getting consistently scores above 215. Today, I was just looking at the score of Delhi Capitals versus Rajasthan. Delhi scored 221, which may not be as high as some of the other scores, but still, like 220 is becoming like a norm. So, why do you think that sort of that this is happening in IPL this year, and how do you see that this having any kind of impact on the international T20 scene? Yeah, this is interesting, right? So I feel there are a number of factors that have resulted in this. एक तो the quality of the pitches. Pitches are relatively flat. Secondly, batters जो हैं, they've gone crazy. They know they have to capitalize. एक बंदा ने 100 मारा है अगर 40 balls पे, next one knows कि I can beat him, क्योंकि हमारे पास एक तो first of all ability तो है batters के पास, but the conditions have suited them as well. Flatter tracks, boundary sizes are not that big as compared to the previous seasons, I believe, और
तीसरा, this might hurt a few of my Indian fellows, but there is a lack of quality bowling, and that is because only because कि बहुत ज्यादा टीम है, 10 teams है. Even Pakistan would have struggled in this. 10 teams ले आओ यहाँ पे भी, filling up the roster with quality bowlers is going to be difficult. किसी के लिए भी. So you see some teams जिनके लिए पूरा tilted है, वहां पे आपको दो दो तीन तीन क्वालिटी बॉलर्स मिल जाते हैं, और फिर दूसरी कंपैरिजन करो तो they're struggling to find the right combination. So if we take an example of Sunrisers Hyderabad, right? Amazing batting, पागलों वाले उनके बैटर्स. Bowling थोड़ी सी weak इस sense में मैं कहूंगा. They're all decent in their own right. Bhuvneshwar is great. Cummins is good. I'd prefer Cummins in Test cricket, but he's a decent enough T20 bowler. But they do not have a spinner. They do not have a spinner. मतलब शहबाज है, एक और है, I'm forgetting his name, but उसी को आप compare करो to the likes of Rajasthan. Now they've got a complete bowling attack. They've got Trent Bolt with the new ball. They've got Landry Berger. खैर अभी नहीं आजकल वो खेला, लेकिन वो new ball से था. Sandeep Sharma has been a revelation. और Yuzvendra Chahal and Ravichandran Ashwin, they've got the best spin attack as well. So वो एक rounded पूरा bowling unit आ जाता है. दूसरी साइड पे जिन टीमों को ज्यादा पड़ भी रही है, दिल्ली कैपिटल्स को बहुत ज्यादा रन पड़े हैं, आरसीबी को रन पड़े हैं, उनका इशू एट द एंड ऑफ द डे आप bowling पे ही रहे थे यार. Bowling की strength is weak as compared to the other teams. So there's a number of factors जिसमें batting का intent जो है वो completely change हो चुका है. Flatter pitches, smaller boundaries, and the quality of the bowling at some in some teams as well. तो आपने पूछा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा. थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा. आई स्टिल बिलीव इंटरनेशनल क्रिकेट, वर्ल्ड कप स्पेशली, वहां में ना स्टेक्स थोड़ी सी ज्यादा हाई हो जाती है. एवरी प्लेयर इन एवरी टीम वांट्स टू विन इट फॉर देयर कंट्री. ठीक है, आपको रिलेटिवली हाई स्कोर्स मिलेंगे जहां पे थोड़ी सी फ्लैटर पिचेस हों. वी सीन फ्लोरिडा लॉडरहिल वाला जो ग्राउंड है, इट्स हिस्टोरिकली हाई स्कोरिंग. वहां पे टीम्स कैन गो berserk. West Indies, on the other hand, Caribbean pitches, you get slow pitches काफी जगह पे, तो वहां पे थोड़ी सी cautiousness तो आएगी. और फिर टीमों का कॉम्बिनेशन भी देखना होगा. If you look at Australia, they've got Head and Warner up top, they're gonna go berserk. If you look at India and Pakistan, I feel that's where they're gonna वहां पे उनको लॉस होगा. That's the power play opening. If India go with Rohit and Kohli, I don't think they'll go with Rohit and Kohli. They'll go with Rohit and Jaiswal. Jaiswal can go, but अगर वो विकेट लूज कर देता है वहां पे इम्पैक्ट होगा. इंडिया को वो पावर प्ले कैपिटलाइज करती है. पाकिस्तान फेमसली सबको पता ही है, they do not capitalize on power play. So वहां पे उनको इशू होगा. तो एक वो डिफरेंट अप्रोचेस देखने को मिलेंगी. लेकिन IPL का as such high scoring impact, I do not see it making an impact in international cricket just now. Right, interesting, Saad. And of course, you touched upon the aspect of what would be India's opening combination. We'll come to that towards the end of that. But a question, Saad, मेरे mind में है जो initially was not there as part of my list of questions, but I would like to ask you that PSL ने किस तरीके से coming back to PSL and talking about linking it to the Pakistan national team. Now, हमने अभी देखा recently पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज जहाँ पे scores were again in the range of 170, 180, and there was a lot of criticism which has always been and you yourself have spoken a lot about the aspect of the strike rate of the Pakistan top order, especially Babar Azam and Rizwan. Of course, Rizwan got injured during the series. He didn't play many of the games, but again, my question is that Saad ki PSL ने क्यों has not been able to translate or impact the Pakistani national team in terms of its approach towards T20, because एक league का एक benefit होता है that when foreign players come and interact with local players, तो एक impact आता है, एक approach में impact आता है, एक सोच में the mindset. But we still see that even Babar Azam in one of his interviews during the series against New Zealand, he said that हमने जो score किया था was quite a good one. He again hinted towards the pitch and all. तो मुझे as Indians we feel that there is a lack of
acceptance ki yaar we have to change our game, we have to take our game to the next level, and sometimes we see that in our Indian team also. So but sticking to Pakistan, since you are from Pakistan and talking about their team, आपको ऐसा लगता है that the PSL has not been able to translate the mindset, or transform the mindset and approach of the Pakistan team, or do you think there are other reasons for that? Yeah, I think it's about the mentality, not per se the PSL hasn't been able to. If you look at the PSL and PSL का record उठा के देखें, Babar and Saim and Peshawar Zalmi, they've got amazing strike rates. They're the best hitting team in the PSL. Power play में सबसे ज़्यादा runs भी उनके होते हैं और strike rate भी सबसे ज़्यादा इनका होता है. Babar strikes it at over 150 in the PSL. This to translate it to the Pakistan national team. मेंटालिटी का थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा हो जाता है. आई डोंट थिंक, और ये काफी अरसे से मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तानी मेरे भाइयों को बुरा लगेगा, बहनों को बुरा लगेगा, बट मेंटालिटी है थोड़ी सी, वो कहते हैं ना एक मेंटल मिजेट्स, वो मुझे लगता है. और ये मैंने आज एक शो भी किया, उसमें बात भी की है कि देयर इज एन इशू विद पाकिस्तान मेंटालिटी, कि वो अभी भी ना पास्ट में फंसे हैं. दे आर स्टिल couple of years behind today's T20 cricket. They feel if we put on a par score 178, 180 हमारी limit है, and then we can ask our bowlers to do the job. We all know Pakistan has a good bowling lineup, लेकिन T20 cricket है, you cannot ask them to do this every day. Yeah. ठीक है, 3 मैचेस में से एक में वो कर भी जाएंगे, but when you do not go, मसला सारा यहाँ पे आता है. ठीक है, फॉल ऑफ आता है, हर टीम का आता है मिडिल ओवर्स में 7 to 15 में स्ट्राइक रेट ड्रॉप होता ही होता है हर टीम. लेकिन वो उसको पूरा करने के लिए ना, यू हैव टू, आई एम सॉरी आवाज कर दी, हाँ. सो उसको पूरा करने के लिए यू हैव टू कैपिटलाइज ऑन द पावर प्ले. अब मेरे लिहाज से आइडियल सिचुएशन मीन सॉरी, the average score you have to hit in the first 6 over if the conditions are all right. ये ना हो कि बिल्कुल रैंक करने पे आप हल्के हो, तो मैं समझ सकता हूँ 6 ओवर में 60 तो आपने करना. अगर आप वहां तक भी नहीं पहुंच रहे, तो फिर आप at the end of the day you're asking too much of your finishers or the lower middle order to pull off a job which won't come every day. Once in a blue moon, yeah, you can sure वो कर लेंगे, लेकिन अगर आपका कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ प्ले ही ये बना हुआ है कि आपने 6 ओवर्स में 50 कर लिया, 45 कर लिया, उसके बाद फिर आप 7 ओवर से 15 ओवर्स में आप 7-8 के रन रेट पे चल रहे हो, और फिर 5 ओवर्स में कैपिटलाइज करोगे, एक दिन तो चल जाएगा वो, 4 दिन नहीं चलेगा फिर आपका. So I'd rather see Babar, Saim, everyone to go berserk in the first 6 overs, post 78. फिर उसके बाद बेशक ड्रॉप ऑफ आ जाए, and then you can ask for last 5 overs में आप 50-60 भी मार देते हो, that's gonna take you to 190, मतलब 20 रन का गैप आता है वहां पे. हाँ ठीक है, कभी कभार ये अप्रोच फेल हो जाएगी, you're gonna lose wickets in the power play and you're gonna post 140, 120. I'll take that if you can pull off 200 consistently over a number of matches. 3-4 मैचेस में 200 मारा और फिर अगले मैच में आप 120 हो गए. I'll take that rather than posting 178 जो कि इस न्यूजीलैंड सीरीज में मारा था. 178, 178, 174. Yeah. Can't mind it. Yeah, but yeah, Saad, you talked about mentality, but who is it going to change? I mean, is it so difficult for a cricketer of Babar Azam's capability and talent to switch that mindset a bit, or is it that there is an instruction given by the management that you have to play like that? Why do you think is it so difficult for him to change that mindset? I don't know, man. ये this is a very tough question जो मैं और बेराम भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि मतलब why चेंज. आप अगर अपनी इंटेंट पेशावर जल्दी के लिए चेंज कर रहे हैं, एंड इट्स विजिबल कि आप आके मार रहे हो, you're hitting sixes. You do not expect Babar Azam to do that, right? You expect classical fours and stuff like that. Coming out with bashing bowlers in the power play. और वही चीज जब आप पाकिस्तान में आते हो, तो बिल्कुल अपने शेल में चले जाते हैं सारे प्लेयर्स. टीम मैनेजमेंट का भी मैं सारा ब्लेम नहीं दे सकता, बिकॉज आपको पता ही है यहाँ पे हर छठे महीने तो दूसरी टीम मैनेजमेंट आ रही होती है. सो इट्स अ होल कल्चर जो कि पूरी की पूरी टीम को ही मैं
साथ लेके चलूंगा, जिसमें लीडरशिप ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी एंड शादाब खान, दीज 4 guys हम कंसिडर करते हैं उन्हें लीडरशिप ग्रुप ऑफ द पाकिस्तान साइड। सो Hmm. वहां पे एक बहुत बड़ा इशू है। फिर जो भी नई टीम मैनेजमेंट आती है, अब होपफुली Kirsten is going to be our head coach, so let's see what change he can bring. लेकिन आज से पहले जो भी मैनेजमेंट आई है, I don't think has been able to truly make a change in Pakistan's limited oversight. Hmm. Yeah, interesting. And I think ये conversation हमारे इधर भी होता है with respect to Virat Kohli and there's a lot of questions raised. In fact, Gavaskar also raised a bit of a question on his strike rate Yeah, days ago, and yeah, so I think it's just fascinating to find out that people of such high caliber and ability and success that they've got, either it is because they believe in the success that they've got and they stick to it, but I think in today's day and age, it is important to adapt to the needs. So anyway, I think moving forward, rather move going back, yeah, Saad. So एक SNS Cricket Diaries का एक बहुत ही one thing that I like to do is to talk to my guests about some old matches and not just talk about what's going on currently. तो we've seen some wonderful India Pakistan matches over the years. तो आपके ऐसे कौन से two favorite India Pakistan matches हैं, कोई भी format हो, and why, and what are your like the memories that you have with those matches? यार एक तो recent year पे, that's the 2021 T20 World Cup. Yeah. That was the first time Pakistan beat India in a T20 World Cup, और honestly we didn't, I didn't expect many. मुझे हम जब भी यहाँ पे एक थोड़ा सा ये है कि जब भी इंडिया के साथ मैच आता है ना वर्ल्ड कप्स में, that's how I lost it. Hmm. Just be competitive, right? So that change, and seeing a team जिसने you know आप लोग सारों को पता ही होगा, पाकिस्तान has been through some troublesome times over the past few years, Yeah. और जिस तरह की टीम होती थी हमारी, then we saw a change in this team. The likes of Babar, Rizwan, Shaheen, Naseem, the way they carried themselves, Shadab bhi hai usme, Imad bhi tha, Hafiz, Malik. The way they carried themselves was something new. जिस तरह वो रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान को, ग्रेट एम्बेसडर्स टू पाकिस्तान क्रिकेट, एक यूनिटी नजर आ रही थी टीम में, कोई इन फाइटिंग पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं था, जस्ट वाइब्स जो थी ना उस टीम से वो बहुत ही अच्छी। And seeing these guys do it against the arch rivals, जिसका हम कहते हैं, that was something special in a way. ठीक है, it wasn't the best game of cricket, but it was a special moment for Pakistani fans Mhm. to see us get a win over India in a World Cup. Or the way they did it, it was flawless. It was a flawless victory, right? 10-wicket win. You don't expect that from a Pakistan India game in the favor of Pakistan. इंडिया की फेवर में आप देख सकते हो, हिस्टोरिकल डेटा यार बहुत बहुत मारा है उन्होंने वर्ल्ड कप में। Hmm. और दूसरी गेम जो है, आई मीन अगर वो कोई पाकिस्तानी, यार गेम्स बहुत हैं वैसे सिद्धार्थ, अब आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी ही मैं बोलूंगा। आपने ऑल फॉर्मेट का बोला ना, वहां पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बट आई एम गोना से चैंपियंस ट्रॉफी 27। Hmm. एक तो वो थोड़ा जवान भी थे हम, आप पीक ही कर रहे होते क्रिकेट अपनी उसमें, उस वक्त क्रिकेट कवर भी नहीं करते थे, वी वर जस्ट प्योरली फैंस। तो वो बहुत स्पेशल मोमेंट था। फाइनल था, जिस तरह हम पहुंचे थे फाइनल में, एक टाइम था हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर रहे थे। 8th रैंक टीम कमिंग इनटू द टूर्नामेंट, लूजिंग बैडली टू इंडिया इन द फर्स्ट मैच। उसके बाद रिसर्जेंस वी सॉ, सरफराज अहमद लीडिंग हिज ट्रूप्स, यंग टीम, बाबर आजम भी उस टीम का पार्ट थे, शदाब वाज फेयरली न्यू, फहीम अशरफ भी था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ही वाज न्यू, हसन अली वाज मैन ऑफ द टूर्नामेंट, और वहां से आपको लग रहा था पाकिस्तान फाउंड अ जेम। खैर बेचारा हैज इंजरी इश्यूज एंड अदर स्टफ, ही इज फॉलन ऑफ, बट वो जो मोमेंट था ना, Hmm. beating India in a Champions Trophy final when no one expected. Hmm. Literally, no one expected, right? Hmm. तो और the manner in which we did, थोड़े से लकी हो गए, बुमराह की नो बॉल की वजह से फसल लाइफ मिल गई, बट उसके बाद just dominance,
Pure dominance. We do not expect this from Pakistan, especially in a final. Or just like a previous incidents हुए with India के साथ. You all remember the Mohali semi-final 2011 heartbreak. The 2007 T20 World Cup में final में वो मिसबान ने जो scoop मारा था. तो फाइनल में जाके अगर पहुंच भी जाए इंडिया के साथ तो आपको होता था यार पता नहीं क्या हो. तो वो it was coming of age moment for the young side. तो वो एक बड़ा special moment. Yeah, I think when we talk of the history of Pakistan cricket, I think instead of phases of consistency, I think Pakistan cricket is all about moments. That's what I feel, and and that of course that was an incredible game of cricket. I mean, not from the perspective of a of a very even contest, but I think in terms of the way Pakistan won, and I still remember the game against Sri Lanka. Where Sarfraz Ahmed hit a very crucial knock to win when they were almost about to lose. So I think the stars were aligning for them, or एक जो typical Pakistan resurgence towards a tournament होता है, so that we saw in that. So yeah, I'm sure that some memories of some Indian fans would be sort of traumatized by the two matches that you have. लोगों ने कितना मारा है यार हम ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं भाई 2 विक्ट्री है भाई खुश होने दो. Right, right. So, going ahead, Saad, and talking about again your favorites. So, I would like you to tell us one Pakistani favorite cricketer and one Indian favorite cricketer of yours, and why. Yeah, this is a very पाकिस्तानी में काफी ज्यादा ऑप्शंस है but I'd have to say my hero growing up that was Saidan. Man, I used to love him when I was growing up. I was literally maybe lefty, वो भी lefty. उनको देख के पूरा बड़ा हुआ. I remember I was what 5-6 years old when he hit that 194 against India. मैं शुरू की थोड़ा सा part देखा था and because मैं बच्चा था I fell asleep. I woke up in the middle of the night. मैच चल रहा था उस वक्त अब्बू से पूछा तो 194 मार दिया सही. यही प्लेयर यही है और कोई नहीं. तो वहां से मैं सही अनवर को करता था आइडियलाइज. और इंडिया की बात जहां तक है विराट कोहली में हर एक आंसर आई एम प्रीटी श्योर जिससे भी पूछते होगी यही होगा. विराट की क्या ही बात. आई मीन मैंने आज भी हम यही शो कर रहे थे आईपीएल वाला में बैराम रिकॉर्ड. तो मैंने उसे ये बोला कि विराट कोहली जो कि बाय द वे जब आएगा तो उसमें ये बात होगी कि he is the greatest ODI batter of all time. I haven't seen it better. The way he adapts to the situation, the way he chases down runs, जिस तरह वो अपनी innings pace करता है, the fitness, the smartness, and he's produced some great batters, right? But Kohli for me is right up there. Yeah, I think of course Kohli का जो 2022 World Cup का knock था, that will go down as one of the greatest all format knocks, I would say. If ever someone does an all format like top 10 or something, I think that will probably come there. But coming to Saeed Anwar, he was also one of my favorites, Saad, growing up, and I remember that match very well against India in '97 when he scored 194. And I think, and I've told this to many people, that when Sainath used to play against India, there was some sort of a different zone that he used to be in, and you just literally murder the likes of Srinath and Prasad, and yeah, I mean some great knocks, Sainath. And even I go back sometimes, especially I see one of his knocks against Australia at the Gabba in 1999. Where he scored 118. Of course, Pakistan lost that match, but वो जो उसमें against McGrath and Fleming and Shane Warne, the kind of strokes that he played was amazing. So yeah, I mean, definitely Saeed Anwar is also one of my favorites. Okay, people over here criticized from the video, so ये कहते हैं कि Saeed Anwar was a bit more fit एज अ फील्डर और सब कुछ अपना थोड़ा ख्याल रखता वो और थोड़ा स्विच ऑन हर वक्त होता ना ही वुड हैव बीन एन ऑल टाइम ग्रेट. स्टिल मेरी बुक्स में वन ऑफ पाकिस्तान का तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स प्रोड्यूस. बट स्टिल ओपनर्स में अगर मैं काउंट करूं ना तो सईद अनवर फॉर मी पर्सनली इज राइट अप देयर अलोंग विद द लाइक्स ऑफ ही नॉट कौन है ओपनर मेरे अब जहन से निकल गया मतलब तेंदुलकर यूज्ड टू ओपन यूज्ड ग्रेट बट राइट अप देयर फॉर मी. Yeah, yeah, it's great. So yeah, we're coming towards the end of this show, Asad. But now going
ahead and looking towards the World Cup that's going to happen now in, I think, just about less than a month's time. So I think it's a wonderful time to talk a little bit about the chances of both India and Pakistan, and both the squads have also been announced. So what are your first impressions about? Let's go with Pakistan. Your first impressions about this squad, and what do you think are their chances, and what do you think they should do to give themselves a good chance of winning the tournament? अच्छा सिद्धार्थ, पाकिस्तान का भी वर्ल्ड कप का स्क्वाड नहीं आया, आयरलैंड इंग्लैंड का है 18 से, अब वो उससे नैरो डाउन करेंगे 15 में. Okay, okay, So, okay, okay, okay. so yeah, they need to figure out the combination. Mhm, If they are open to a change in their mindset, mhm, they have the ability to go all the way and win it. mhm, But इशू ये है कि करेंगे, mhm, ये अपने सेट टेम्पलेट के साथ जाएंगे और प्रोबेबली कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे. मतलब दे स्टिल हैव टैलेंट, और शायद कैरेबियन की पिचेस इनके प्लेइंग स्टाइल को सूट कर ही जाए. लेकिन ग्रुप स्टेज जो है वो सारा का सारा हम यूएस में खेल रहे हैं, इंडिया में आते हैं यूएस में खेल रहे हैं. yes. तो एक मैच आपने आयरलैंड वाला जीतना है. बेसिकली इंडिया Mhm, और पाकिस्तान में से एक तो वो हारेंगे जो भी टीम, और दूसरा एक पास आयरलैंड को हराना है mhm, और यूएस और कनाडा को हराएगी. सो mhm, सुपर 8 में तो पहुंच ही जाएगी ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान. mhm, mhm, पाकिस्तान का थोड़ा सा इशू जो मुझे लग रहा है, हाउ डू दे फिट इन बाबर, साइम, रिजवान, उस्मान, फखर जमान in the top three, because that's their best position. mhm, Ideally, I would like to see Shadab Khan come in at four, mhm, because we've seen him do this time in again for Islamabad United over the past few seasons in the PSL. अभी भी recently न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक उसने अच्छी इनिंग्स दी थी नंबर 4 पे आके. लेकिन पाकिस्तान करता ही है कि फखर को 4 पे खिलाता है, उसकी वजह से पूरी जो लाइनअप है ना आपकी, द एंट्री पॉइंट्स दे गेट मेस्ड अप. और then you do not have the luxury to play Azam Khan in this side, who I mhm, feel can, ठीक है अभी I'm still divided on him on this sense कि if he doesn't perform in the Ireland series तो फिर you don't, you can't take him. कोई आपके पास वो नहीं है ना कि हाँ लेके ही जाना. mhm, But if he does come good in the Ireland series, then I think he could be that X factor in the lineup yeah. that could change the whole game. He has a good record in the CPL. वहाँ पे experience है उसके पास खेलने का. He takes on spin well. और वो जो middle overs में हम बात करते हैं ना 17-15 में पाकिस्तान का बहुत run rate drop होता है. He has the ability to take it up a notch along with Shadab Khan in the middle order. If they manage to do that somehow, I think Pakistan has the team, because अभी bowling पे आता हूँ मैं, has the team to get सेमीफाइनल्स तक तो पहुंचने की एबिलिटी है. आगे भी जा सकते हैं. पाकिस्तान क्रिकेट मर्क्यूरियल है, कुछ पता नहीं होता इनका. Yeah. बॉलिंग में भी थोड़ा सा इशू इनको ये है कि क्वालिटी बॉलर्स, बट जो फेजेस है ना गेम के उसमें सारे फिट नहीं होते. आमिर, शाहीन और नसीम मेरे लिए इंडिविजुअली तीनों ब्रिलियंट है. कॉम्बिनेशन इनका मुझे थोड़ा सा इफी लग रहा है. I'd ideally want Haris Rauf back to his best. Shoulder injury हुई है बेचारे को. Hopefully he recovers well, and वही जो स्पीड मारता है वो एंड चेंज पेस एट द डेथ, आइडियली अगर वो आ जाता है तो शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ. then you've got the likes of Abrar Khan, who is a mystery spinner. दुनिया ने कम खेला हुआ है. He has a good record in Test cricket. He was really good in the PSL, और अभी 2 मैच खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें भी अच्छा था. So he could come in handy as a mystery spinner. If you haven't played him, he could be difficult to pick in West Indian conditions. Or you've got the likes of Shadab, Imad, and Iftikhar Ahmed, who can do the ram. So bowling unit, उस तरह तो बहुत ज्यादा options है आपके पास. You've Mhm, got a left arm pacer, right arm pacer. You've got a death specialist. You've got a mystery spinner, a leg spinner, a left arm spinner, and an off spinner. जो bowling type है सिवाय left arm orthodox के वो सब है. Left arm unorthodox के वो सब है. So अब ये यार combination ये सही खिला लें अगर, they do have the ability to go all the way. इंडिया पे आ जाए. yeah. Before you come to India, Saad, I just would like to ask you about Imad Wasim and Mohammad Amir. Do you think that
क्योंकि इधर in India there's this perception about Pakistan that the players आते हैं once the board changes, once you know the management changes, वो अपने favored players को लाते हैं. So do you think that they have come back on form in domestic T20 leagues, be it PSL, be it other leagues, or do you think it's just a mere change because of the administration? And and and, So, and how do you view them, because having not played international T20 cricket since so long? okay, so दोनों different cases मेरे लिहाज से. आमिर took retirement back in 2020. उसके मसले हुए थे मैनेजमेंट के साथ. He said कि मैं इस मैनेजमेंट के अंदर नहीं खेलूंगा. ठीक है, उसे ठीक. He 4 साल वो बाहर रहा, लीग शीक्स खेलता रहा. अभी PSL, he was really good in the PSL. Change in management, change in the PCB. आपका वो जो perception है ना, आप जो कह रहे थे इधर इंडिया में बना हुआ है, I think that does hold a bit to this particular case कि एक तो management wanted him to come back और फिर दूसरा आमिर की performance भी अच्छी थी, so he came into the side. However, I feel Amir is a great bowler. He's the smartest bowler Pakistan's got in the entire set. लेकिन जरूरत नहीं मेरे लिहाज से. लेकिन आ गया, आई टेक हिम विद both hands, as we all know the quality is. दूसरा इमाद वसीम का थोड़ा सा different case था. इमाद वसीम का थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज थे. He wanted to play franchise league because पूरा साल वो बैठा होता है और जब T20 नहीं खेल रहा था पाकिस्तान और उसको वो करने नहीं दिया, तो उसको उन्होंने लगाया हुआ था, लिमिट लगाई थी तो फ्रेंचाइज लीग खेल सकते और समथिंग लाइक दैट. तो इमाद वसीम ने गया फिर मैं रिटायरमेंट. ठीक है. I was a bit shocked on that because I felt that Pakistan's lineup had a big Imad Wasim sized hole in it because Mohammad Nawaz, ever since that Kohli chase of in the last over in the 2022 World Cup, तब से वो, mentally he's gone. He's not that Mohammad Nawaz anymore. इमाद वसीम का बहुत बड़ा गैप था टीम में. और फिर PSL में जो उसकी अदर वर्ल्डली परफॉर्मेंसेस थी ना इन द प्लेऑफ्स, he was garbage in the first 6-7 games. मतलब to the point कि मैं बोलने लगा कि यार ये क्यों ले लिया है, निकालो इसे टीम से. खैर वो जब भी मैं बोलता हूँ तो उल्टा पड़ता है. ये मेरा और बराम का जोक है, हम दोनों रिवर्स जिंक्स कर देते होते हैं. सो उसके बाद इमाद वसीम पिक्ड अप फॉर्म. दोनों प्लेऑफ मैचेस एंड द फाइनल ऑफ द PSL का मैन ऑफ द मैच था. उस तीनों मैचेस में चेज डाउन 2 scores, took a 5 for 22 I believe in the final or something like that. फिर आके उसने स्कोर भी चेज कर दिया. 5 विकेट ले गए. बॉय ड्रेसिंग रूम में जाके सिगरेट भी पी के आ गया. वो भी पिक्चर्स आ गई थी. सो वो एक बैड एज पर्सनालिटी बन गई थी. और इमाद वसीम आ जाएगा वापस. उसका डिसीजन आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उसकी जरूरत भी थी, रोल भी था उसी की जगह बनती थी ओरिजिनली जब उसने रिटायरमेंट ली थी. he came back, he performed, he won Istanbul the trophy and he came back into the side. और क्लियर है दोनों का, आमिर और इमाद वसीम का, ये T20 वर्ल्ड कप तक ही है, ये उसके आगे नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के लिए. सो शॉर्ट टर्म फिक्स के लिए बुलाया दोनों को. इतना मैं कहूंगा कि ये दोनों प्लेयर्स जो है ना, these two are probably the toughest mentally in Pakistan. एक तो इमाद वसीम, the way he stays cool in pressure situations while chasing down. अब मुझे इस पे गालियां ना देना आप लोग, लेकिन reminds me of MS Dhoni, not the quality but the ability to soak in the pressure. MS Dhoni used to take the game deep और फिर जाके चेस करता था. रिसेंटली थोड़े से चेजेस नहीं हुए थे तो वहां पे भी वो हो गया था. But Imad Wasim does have that ability to soak in the pressure. And as for Amit, we all know the quality he possesses. He's a smart bowler. He's a wonderful new ball bowler. And I believe कि उसको अगर आप सही तरह पावर प्ले में यूटिलाइज कर लो, आपके पास अपर हैंड आ जाएगा उस चीज में. Interesting. Yeah, and about the Indian team, what do you think about the squad that has been announced, and do you think India has a good chance of winning the tournament? As for India, I feel एक तो मुझे रिंकू सिंह बहुत पसंद है यार. After Kohli, he's my second favorite cricketer right now. But उसका मुझे दुख है
लेकिन I understand why he isn't in the team. Because you had to take one backup wicketkeeper, and I felt that Sanju Samson had a great IPL season. His probably his best, or he deserved a place in the squad. He can come in as backup for Pant, and he can be a top three replacement if needed as well. So that made sense. तो मुझे लग रहा था पॉइंट ऑफ कंटेंशन सिर्फ रिंकू और संजू सैमसन। उसके बाद दूसरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन कुछ लोग कह रहे थे, मैं नहीं एग्री करता से कि वन ऑफ जडेजा और अक्षर बिल्कुल। आई फील बोथ आर सिमिलर इन नेचर बट दे आर डिफरेंट इन देयर वेज। रोल्स दोनों के सेम है, देयर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। आइडियली आई प्ले देम बोथ इन बिकॉज एक तो जडेजा आपको 3D क्रिकेट दे देता, गुड बैटर, ग्रेट बॉलर, टेरिफिक फील्डर। अक्षय पटेल इज समथिंग डिफरेंट। हाइट है उसकी, थोड़ा सा लूप में आती है उसकी बॉल, तो बाउंस ज्यादा करती है, मेरे लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है दोनों के अंदर। As for the team combination, I feel India ka spin attack is brilliant. They do lack another pacer alongside Bumrah. Bumrah, we all know, is world class, the best bowler in world cricket in all formats. मैं तो कहता हूँ, there's no one as good as Bumrah these days. उसके साथ जो है ना, सिराज इज इन पुअर फॉर्म। हालांकि अभी एक दो मैचेस में उसने अच्छी बॉलिंग रही है, लेकिन आई स्टिल फील ही इज अ ब्रिलियंट टेस्ट एंड वनडे बॉलर। आई एम नॉट too keen on him in T20s. और अर्शदीप is hot and cold. अर्शदीप is inconsistent. अर्शदीप का वो मसला है जो मैं मेंटल मिजट की बात कर रहा था ना, मुझे फील होती है वो प्रेशर आता है वो क्रम्बल कर जाता है बेचारा। टैलेंटेड है सर, इसमें कोई शक नहीं है, swings it both ways with the new ball. When on song on his day he is lethal, लेकिन फिर वो इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। दैट्स एन इशू फॉर इंडिया बॉलिंग लाइनअप में। बैटिंग लाइनअप में मुझे कोई मसला नहीं, टेरिफिक बैटिंग लाइनअप। Do you not think that strike rate का मसला जो पाकिस्तान को है वो इंडिया को भी है या? I don't think so. I thought अगर तो रोहित और कोहली एक साथ ओपन करते हैं ना, तब मसला हो। अगर कोहली वन डाउन आ रहा है और रोहित और जायसवाल कर रहे हैं, बट रोहित हैज टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई नीचे इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है मेरी, अक्षर तक अगर जा रही है, अक्षर तक 7-8 तक, so I have the freedom to come in and hit. And when we all know when Rohit is in that mood, तो फिर तो लंबे जाते हैं, फिर नहीं रुकता वो। तो रोहित और जायसवाल का अगर वो रोल क्लैरिटी ये कर देना कि भाई वी हैव टू कैपिटलाइज ऑन द पावर प्ले, क्विक स्टार्ट देना है, इवन इफ वी लूज अ विकेट अर्ली ऑन, नो मैटर, कोई मसला नहीं, हमने बॉलिंग तो लूज नहीं की, कोहली कैन कम इन एंड एंकर। उसके इर्द गिर्द देन you've got the likes of Surya Kumar Yadav, you've got the likes of Shivam Dube, वो बेचारा 2 गोल्डन डक्स पे आउट हो गया पिछले दिनों, लेकिन वी ऑल नो शिवम दुबे व्हाट ही कैन डू। यू गॉट हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, सारे हिटर्स हैं। तो स्ट्राइक रेट का इशू जिन लोगों को लगता है होगा, सिर्फ उस केस में हो सकता है अगर रोहित जो है वो बाबर वाला रोल प्ले करने लग जाए और यू नो 6 ओवर्स में से आप 50 कर रहे हो, तब हो सकता है। अगर उनका रोल क्लैरिटी हो कि वी हैव टू कम इन एंड हिट, आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू विद दिस इंडियन टीम। I think, yeah, इधर साथ हमारे इधर especially जब IPL भी चल रहा है तो there's a lot of talk about strike rates of both Rohit and Kohli. So I think we a lot of the fans here are skeptical about India's chances, but I hope that for the sake of the tournament, India and Pakistan both have a good match firstly in the league stage, and you never know that we can have a repeat of 2007 World Cup final. And I'd love that. it'll be awesome to have them playing at Barbados, and yeah, it'll be great. It'll be a great occasion. So, but Saad, in the interest of time, we'd like to now finish this interview. But thank you so much for being here. आपने जो बहुत सारे angles पे cover किया है, and the expertise that you've shown, it's I think it's just enriched the conversation, and it's wonderful to do this, and hope to keep in touch with you. For sure, Siddharth. It was my pleasure. I had a lovely time. Thank you. Thank you so much, Saad. And thank you to my audience for watching this. And till we see the next time, take care. Bye.